Good morning, all. Okay, and now welcome back for the series of lectures of hydraulic engineering. In the previous sessions, we have discussed about the syllabus of hydraulic engineering in detail. Okay, now we'll start for the unit number 1, that is from the section 1. Okay, so talking about the syllabus of the unit number 1 from the section 1, that is the title is a Introduction to Open Channel Flows, which includes classification of channels, types of flows in open channel, and geometric properties. It is the basic things we have to study firstly. Okay, so now and then uniform flow, this equation, Manning's equation. Those are the governing equations for the uniform flow. Hydraulically most efficient triangular, rectangular, and trapezoidal sections. Computations of normal depth, conveyance factor, section factor, hydraulic exponent, uniform flow computations, concept of Proud number, velocity distribution, kinetic energy and momentum correction factors, and then measurement of velocity by using the pitot tube, current meter, and float, etc. And the second part which we are going to discuss or study in this unit number 1, that is about the critical flow, which includes specific energy and specific energy diagram, alternate depths, depth energy relationships in open channel, and the specific force. Okay, so this much syllabus is there for your unit number 1, that is from the section 1, we can say. Now we'll start for syllabi bit by bit. Firstly, we'll see that what does it mean about the hydraulic engineering, and when to say that that particular study is an hydraulic engineering, we can say. Okay, so what does it mean about firstly? So hydraulic engineering is nothing but the study of forces and their effect acting on the fluid, that fluid as a water. Means whenever in a fluid mechanics we is to consider that a fluid as a water, then in that case that particular aspect or particular fluid mechanics is considered as a hydraulic engineering. Okay, so this is an definition we can say. So in a hydraulic engineering we can say we are going to study the water or the effect of the forces acting on the water under the at the rest and at the motion, we can say. That is as statics and dynamics conditions, we can say, that to be related to the water. Means water we are going to study under the application of various forces. Okay, that is nothing but the hydraulic engineering. Then the next part, that is from the unit number 1, that is the that is open channel flows. That is first we will discuss what does it mean about the channel or a canal firstly. So channel or the canal, what does it mean about? Channel or a canal, what does it mean about? So generally channel or the canal is the that section which is used for a transformation of the water from the one portion to the another portion, or from one position to the another position, we can say. That is from higher level to the lower level, isn't it? So most of the times the channels are, or the canals, we can say, those are the maybe a natural, or they may be the artificial. It means that trenches, those are used for conveying the water from the one place to the another place. Those are nothing but the channels or the canals. Then after that we have to see the classification of the channels. Okay, so in the classification we'll start classification is based on various parameters or various aspects, we can say. Firstly we'll see that as per the shape. So write on the heading as a classification of channels. Classification of channels. Under that I'm considering the first part as per the shape of the channel. As per the shape of a channel. So channels are classified on the various parameters of the canals or canals. I will go for classification of channels or canals as per the shape. I would like to firstly. So first type, as per the shape of the channel or the shape of the canal, we can say that is nothing but the rectangular.
So might be you have seen a rectangular channel section. आता चॅनल म्हणजे सर्वांच्या लक्षात आलं असेल, चॅनल किंवा कॅनल म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण काय म्हणतो की रोडच्या साईडचे ड्रेनेज लाईन असते, those drainage lines, open drainage lines we can say, those are also and channels we can say. म्हणजे बऱ्याच वेळा डगआउट ट्रेंचेस जे असतात, those are used for the conveyance or the what we can say collection and the safe disposal of rainwater from the roads. Those are nothing but the channels we can say. कॅरेक्टरिस्टिक काय त्या चॅनलची, तर त्याचा टॉप सरफेस जो राहतो तो नेहमी फ्री टू ॲटमॉस्फिअर असतो. Means the flow in the channels is always at atmospheric pressure, whereas the flow in the pipes, that is under the pressure. That is the main aspect or the main characteristic of canals we can say. म्हणजेच कॅनल किंवा चॅनल मधला जो काही फ्लो असणार आहे, that flow is due to gravity. So flow is due to gravitational force, that is due to the slope we can say. Okay. मग पहिला जो टाइप आपण बघणार आहे तो म्हणजे रेक्टँग्युलर. तर रेक्टँग्युलर चॅनल सेक्शन किंवा त्या चॅनल सेक्शनला पर्टिक्युलर रेक्टँग्युलर कधी म्हणायचं, जर का त्याचा शेप हा रेक्टँग्युलर असेल, क्रॉस सेक्शन जो आहे तो क्रॉस सेक्शन जर का रेक्टँग्युलर असेल, तर त्या केसमध्ये आपण त्याला रेक्टँग्युलर कॅनल किंवा रेक्टँग्युलर चॅनल सेक्शन असं म्हणणार. तर जनरली मग हा या टाईपचा कॅनल कुठं यूज होतो किंवा कोणत्या ठिकाणी याचा वापर होतो असं आपण म्हणूयात. तर जनरली तुम्ही बऱ्याच वेळा खेडेगावातलं वगैरे म्हणजे जिथं स्मॉल पॉप्युलेशनचा रिजन असतो किंवा क्राउडेड रिजन नसते, अशा ठिकाणी बऱ्याच वेळा जे ड्रेनेज लाईन असते ती बऱ्याच वेळा आपण आता सध्याला क्लोज आहेत नो डाऊट, परंतु कसं असायचं की तो ओपन ड्रेनेज राहतं. त्या ओपन ड्रेनेजचा किंवा त्या चॅनल जो राहतो ते एक्सकॅव्हेटेड ट्रेंच म्हणजे खोदलेली जी चारी असते तिचा सेक्शन हा साधारणतः रेक्टँग्युलर असतो. So this is about a rectangular channel. I would like to show the water level. The water level in the channel or in the canal will be like this, and this is nothing but the water level indicator. Okay, so this will be the y, that is a depth of the flow through that particular canal or a channel. Then this is the base width b of that channel or a canal, and the total depth of the canal as a d we can say. So here the characteristics we can say for this rectangular channel as a d as a total depth of the canal, that is from ground level to up to bottom. Y is its flow depth, that is a flow which is getting carried by that, and b is the base width. Here it is used a number of the times. It is used for the conveyance of the water, for the small conveyance of the what we can say wastewater as a drainage we can say in small villages or where the population is so less. This is the first one as per the shape. Then the second type of the canal as per the shape, which is mostly used for the conveyance of the water from the one section to the another section, that is a trapezoidal. So trapezoidal channel section might be you have seen, or trapezoidal canal might be you had seen, you have come across that. So what does it mean about, or when to say the canal as a trapezoidal? So in that case particularly, it used to have the slanting edges. त्याचा जो portion जो राहतो, it used to be a slanting one. So in that case we can say that it will be a trapezoidal one. म्हणजे कसं असणार आहे, समजा ही आपली ग्राउंड लेवल आहे. सर डायग्राम काढायच्यात का? Suppose that this is a ground. Okay. So in next type is a triangular. It's acts like an its a shape is like this. This will be a water level. We'll consider this as a water level. They are water level indicator. Then total depth of the canal or the channel as a d, and the flow depth as a y. We are going to consider the depth of the flow as y, okay, and depth of the excavation as a d. Then slanting edges used to have some angle. We'll consider that is an y as x, y by x we can say. This slope I was talking about, y to the x. This y is not related to the flow depth. Whatever the y I'm showing here in for a slide slope vertical we can say, that is not related to the this y. We can correlate, but time being I'm assuming that slope as a generally vertical as to horizontal. So I'm vertical considering as a
y, and this flow depth as a another y. Okay, so y to x, and number of the times this angle also is to be shown. We consider this angle as a theta. So this is our triangular channel section. Then the next shape of the next type of the canal or the channel, as per the shape, that is a circular. That one is called as a circular channel section. Next one. Okay, circular, I will go for directly the shape of the channel as a circle. But as this is a canal or the channel, we can say, so the whatever the water level will be there in, that water level will not be up to its full of the capacity. जो इसमें पानी बहने वाला है, that will not be at the full of capacity. So we'll consider that water level is somewhere else here. Okay, then what will be the total depth of this canal or the channel? Total diameter, exactly. So we'll consider that D, or a capital D, that is a diameter of the canal or the channel. And as usual, once again, the depth of the flow as a y. Here such type of circular channels are used, or circular canals are used. Any example? Drainage pipe. Right. Drainage pipes are the circular one, we can say. Drainage line, I would like to write. This is an example I am quoting over here. And whenever they are running at less than its capacity, then we can say that is a channel or the canal. But if it is running at a full of capacity, then it will be a pipe. Because pipes used to have a pressure more than atmosphere, or fluid pressure is more than atmosphere, whereas canals used to have the pressure as a atmospheric pressure. यानी कि यहाँ पे जो मैंने opens पे जो दिखाया है, I would like to show the water level and likewise, so that you will get an idea where that water is there. That water level indicator is there, but side by side we will have a indication also. Okay, so side by side we will show that this as an ground we can. Completed up to this circular one. Have you done with? Yes, sir. Okay, then the next one, that is a parabolic. So parabolic channel, I think so all of you have seen. All of you have seen the parabolic channel. Now you have to tell me the example of the same. Where you have seen the parabolic channel. Just now I had a statement that all of you have seen the parabolic channel. कहीं पे देखा है क्या ऐसा चैनल सेक्शन आपने? इस शेप में भी साइड में ऐसा इस साइड में आ सकता है. देखा है क्या ऐसा चैनल्स कहीं पे? This is a flow depth y, or I would like to consider this as a ground level. So the total depth will be a d. Anyone here you have seen such type of the parabolic channel section? पाहिला कधी कुठं? कहीं पे देखा है आपने ऐसा चैनल सेक्शन? आई एम टॉकिंग अबाउट चैनल सेक्शन. जो भी रिवर्स और स्ट्रीम्स जो रहते हैं, नेचुरल चैनल्स वी कैन से, तो नेचुरल चैनल्स यूजुअली यूज्ड टू हैव द पैराबोलिक शेप. ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा भी होता है उनका शेप, ये ऐसा भी पैन के जैसा होता है कि नहीं? Yes, sir. Okay, so we can go for both the things over here. This is water. So example, we can say that rivers and streams, those are having somewhat carrying capacities. Then after this compounded,
I'm considering only some of the or the few of the channel sections. As per the shape, we will be having a number of the channels, a number of the types. Okay, but the most of the times those are used or getting constructed. I'm considering that one. So compounded used to have an or two types: compounded one and compounded two. Okay, so compounded channel section. Compounded channel section in the sense what? It is the combination of the whatever the shapes I have shown over here. Okay, so what I will do, I would like to go for a combination of a rectangular and trapezoidal. So bottom portion will be the trapezoidal channel section, and the top portion I would like to consider as an rectangle channel section. So consider this as a compounded one. So at the base, I am considering it as an trapezoidal one, and its top we can say I would like to consider it as an rectangle channel section. So whenever such type of the combination is there, in that case we can say that the canal section or the channel section is a compounded channel section. Let's go for the sketch. You can have a combination, different combinations also. Okay, here I have shown the combination only of a rectangular and trapezoidal. You can have a combination of rectangular, parabolic and rectangular, circular and rectangular likewise. Okay, but they must be somewhere else used practically. Then water level, I would like to go for by a different color. Consider this as a water level. Don't draw the water level exactly as a horizontal line, huh? Because whenever in an open channels we observe the flowing fluid, we observe the undulating surfaces. Okay, so that undulating surface I am considering over here as. Then the flow depths will be two flow depths we can say here. Y1 we will consider as a flow depth for rectangular portion, and Y2 will consider as a flow depth for the trapezoidal section, and total will be the Y, that is a Y1 plus Y2 we can say. So total somewhere else here, that will be the Y, which is the sum of Y1 and Y2. Then here I would have to consider as a ground level, so that we will be able to show the excavated depth we can say. So this as a depth D of the canal. Then again we will be able to show the side slopes, vertical as to horizontal for the trapezoidal. Then base width B, top width T. It will be from this point to this point. यहाँ पे दो टॉप विड्थ भी हम दो टॉप विड्थ्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं. One of the top width will be there for the rectangular portion, another will be for a trapezoidal section likewise, but I have shown here as a combined one. Okay, साइड में पूरा की पूरा ग्राउंड रहेगा. Have you seen such type of the channel section? Might be you have seen the channel section like this, huh? Just see that what I am drawing over here. नीचे ऐसा पैराबोलिक रहता है और साइड में उसके ये ऐसा कंपाउंडेड रहता है. Might be you have seen such type of the channel section. कहीं पे तो देखा ही क्या ऐसा आपने? ऐसा कैनल सेक्शन देखा है क्या? नो सर. जो भी रिवर ड्रेनिंग वर्क होता है कि नहीं, यानी कि जब बाढ़ आती है तभी मान लो कि ये जो रिवर है, ये रिवर है, नेचुरल चैनल है, पैराबोलिक उसका शेप है, ओरिजिनल शेप वी कैन से प्लानिंग फॉर्म में है. और जब उसका उसकी जो वाटर लेवल रहती है, मान लो कि नॉर्मली उसकी वाटर लेवल इतनी रहती है, नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट, बट ड्यूरिंग एन फ्लड कंडीशंस और ड्यूरिंग एन मानसून वी कैन से इट्स वाटर लेवल यूज्ड टू इंक्रीज अप टू दिस पॉइंट. यहाँ तक उसका वाटर लेवल आ जाता है, कहाँ पे? फ्लड में. और इसके साइड में क्या है? पूरा के पूरा सिटी है. इसके साइड में ऐसा सिटी हुआ है, ऐसा बहुत सारा क्राउडेड रीजन है. तब क्या होता है, बाढ़ के समय पे और बारिश के वक्त क्या होता है, ये पानी जो रहता है रिवर का वो स्पिल हो जाता है साइड से, और वो क्या होता है सिटी में फैल जाता है. तो वो रोकने के लिए क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा बांध डालते हैं उसके बैंक्स पे, उसको रिवर ड्रेनिंग वर्क हम बोलते हैं.
वो बांध जब रहेगा ऐसा, यानी कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, कंपाउंडिंग कर दिया, ताकि वो जो डिस्चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था उसको वो क्या कर रहा है, अभी वो अकोमोडेट कर रहा है, ताकि उसमें उसकी वजह से जो भी इनंडेशन हो रहा था, जो भी लॉस हो रहा था, जो पानी सिटी में जा रहा था, वो वहां पे रुक जाए. This is an application we can say for a compounded channel section. Completed the diagram for? Yes, sir. Okay. Completed, Now, sir. now the next classification, this much I am considering about the as per the shape of the channel we can say. Next one is as per the formation. So next classification is the as per the formation, types of the canals as per their formation. कौन से रहेंगे रे, एज पर फॉर्मेशन, as per the formation of the canal. Okay, how we will classify them? कौन से टाइप्स रहेंगे? दो टाइप रहते हैं एज पर द फॉर्मेशन, क्योंकि जिस वजह से वो क्या फॉर्म हो गए हैं, ओके, उनका अस्तित्व आ गया है, वो अस्तित्व में आ गए हैं. एज पर दैट वी टू दैट इज नथिंग बट द एज पर फॉर्मेशन. सो कौन से रहेंगे टाइप रहे एज पर फॉर्मेशन? एनीवन? Naturally or man-made? Right, that is natural or artificial. Artificials are nothing but the man-made. So I would like to first consider as an natural. So an example of a natural canal, example of a natural channel or natural canal. River. Right, rivers, streams, those are nothing but the natural channel. Then second type is a artificial or a man-made we can say. Artificial or man-made channels. इसका example, canals used for the carrying the water from the dams or reservoirs to the fields for the irrigation purpose we can say. So I would like to write here as a canal, क्योंकि उसको हम बहुत बार क्या बोलते हैं, canal बोलते हैं. Okay, so as per the formation, the canals are classified as natural canal or the natural channel or the artificial channel, or it is also called as man-made channels. So natural channels are the rivers, streams, then springs we can say, those are nothing but the natural channels, or the path achieved by the springs while flowing, that is nothing but the either spring, and afterwards it is to be joined to the streams and then rivers. पहिल्यांदा झरा असतो, नंतर ना ओढा होतो, आणि ओढ्याच्या नंतर ना नदी होते. Okay, so likewise the that sequence is that. Artificials are the man-made canals or the channels. Those are used mostly for the irrigation purpose, that is for a transformation of the water from the reservoir to the fields we can say. Okay, so those are generally called as canals. Then the next classification is based on the cross-sectional conditions. So next type, that is a C we can say, it is a classification as per cross-sectional conditions. Cross-sectional conditions यानी कि जहां पे बहुत बार क्या होता है कि जब हम कैनाल देखते हैं तब उसका जो क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो बहुत बार क्या होता है, चेंजिंग होता है, बहुत बार वो नॉन चेंजिंग रहता है, यानी कि उसके जो डायमेंशन जो रहते हैं, दोस डायमेंशंस डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी फ्लो का डेप्थ होता है, फ्लो की वेलोसिटी रहती है, डिस्चार्ज होता है, वो बढ़ने के साथ या कम होने के साथ यदि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, by considering those things we do have a classification of the canals in the two forms, two types में उसको हम क्लासिफाई करते हैं. उसमें से जो पहला जो टाइप है उसको हम प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं. So might be you have heard this word first time, isn't it?
हे याच्या अगोदर ऐकलं होतं का प्रिझमॅटिक चॅनल? एनीवन हॅव यू हर्ड अबाउट दिस प्रिझमॅटिक चॅनल? व्हेन टू से द चैनल एज अ प्रिज्मेटिक? कब बोलने का चैनल को प्रिज्मेटिक चैनल? So whenever we are finding any a canal or a channel, and if it's a dimensions, that is a cross section, we can say it is a bed slope, side slope, they remains same throughout the length. यानी कि जो भी उसका कैनल का कंडीशंस रहेगी, मान लो कि ये आपका एक नेचुरल कैनल है यहाँ पे, या आर्टिफिशियल है, मान लो ये आपका ऐसा रेक्टेंगुलर कैनल सेक्शन है आपका, और रेक्टेंगुलर कैनल सेक्शन जो है कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ए लिया है, यानी कि क्या है, ये ऐसा आपका कैनल फ्लो हो रहा है, ओके, ये ग्राउंड लेवल है और इसमें ए उसका वाटर लेवल है, दिस इज वाटर लेवल. मान लो कि दिस इज योर सेक्शन ए, दिस इज योर सेक्शन बी, और यहाँ पे बहुत सारा लेंथ है उसका, मान लो कि लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज अ L meters. Then मान लो कि at A section the width is a B, okay, then a flow depth as a Y, side slope as a, once again we consider Y as to X, okay, and then a discharge passing through that same is a Q, discharge which is passing through the canal as a Q, we can say. This is at a section A. Then मान लो कि at a section B, at a section B also we have the same flow depth, same base width, then same side slope. Then it means that along the length जो भी characteristics है किसके, कैनल के क्रॉस सेक्शन के, वो जो characteristics है they are remaining same, they are not changing. Then in that case that particular canal or the channel is called as a prismatic channel condition, prismatic channel. यानी कि ideal one we can say. Most of the times what happens, those things used to get changed, जो भी उसका planiform जो रहता है, size shape वगैरह जो रहता है cross section में, they used to change. But if they are not changing, it means the जो भी length है उसका, then उसका जो cross sectional area है, width है, okay, और side slope है, they are not changing at all along the length or along the x direction, we can say they all remains constant. Then in that case we can say that the channel section or the canal section is a prismatic channel section, okay, that is not zero, that is a constant, I can say that is equals to constant, and not that is non-zero, it is equals to constant along the length. So length I have considered here as x meters, we can say A to B, म्हणजे A पासून ते B पर्यंत, यानी कि A सेक्शन और B सेक्शन हमने लिया, इसके बीच में कहीं पे भी हमने मेजर किया फ्लो का डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, और यदि वो पैरामीटर्स चेंज भी हो रहे हैं, कौन कौन, डिस्चार्ज चेंज हो रहा है, मान लो कि डेप्थ चेंज हो रहा है किसका, फ्लो का, लेकिन जो कैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कैनल कैरेक्टरिस्टिक, उसका बेड स्लोप है, जो इसको हम S0 बोलते हैं, ये जो बेड का जो स्लोप रहता है ये ऐसा आएगा आपका यहाँ पे बेड स्लोप, उसको हम S0 बोलते हैं, दैट बेड स्लोप, देन बेड विड्थ, okay, and excavated depth we can say D, those things along with the cross sectional area A, if they are not changing, then that is called as a prismatic channel. Understood? What does it mean about the prismatic channel? लक्षात आले का? Yes, sir. Okay, so this is about the prismatic. Then what could be the non-prismatic then? When to say the canal or the channel as a non-prismatic channel section, कब बोलेंगे आप non-prismatic है? प्रिज्मेटिक में हमने क्या देखा, जो भी उसका प्लानिफॉर्म है, Different होगा सर. वंस अगेन, हाँ, Discharge different होगा सर. डिस्चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन जो है, डिस्चार्ज से हमें कोई मैटर नहीं है, लेना देना नहीं है, डिस्चार्ज कम होने दो, ज्यादा होने दो, वेलोसिटी कम होने दो, ज्यादा होने दो, लेकिन जो कैनाल के कंडीशंस है क्रॉस सेक्शन के, कौन से हैं, उसका बेस विड्थ, उसका डेप्थ D, उसका साइड स्लोप स्लैंटिंग एजेस का,
उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी रहेगा वो अलोंग द लेंथ, यानी कि जहां से वो शुरू होता है और जहां पे वो एंड होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तब हम उसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल रहता है दैट इज अ लाइंड कैनाल्स, यानी कि जो भी मैनमेड कैनाल होते हैं यदि उसका साइड्स बेस वगैरह जो रहता है वो कंक्रीट से या दूसरे मटेरियल से लाइन कर दिया होगा, यानी कि उसका इरोजन पूरा के पूरा स्टॉप कर दिया, तब उसका क्रॉस सेक्शन जो रहता है यानी कि उसका विड्थ नहीं बढ़ेगा, उसका साइड स्लोप वैसा के वैसा रहेगा। मान लो कि डिस्चार्ज आपका फुल है, फुल कैपेसिटी से रन हो रहा है, नहीं तो वो कम कैपेसिटी से रन हो रहा है, तब जो भी कंडीशंस रहेंगे क्रॉस सेक्शन के, वो क्रॉस सेक्शन के कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं होंगे। Under that conditions, that canal is considered as a prismatic one. अभी उसके अपोजिट में क्या होगा, नॉन प्रिज्मेटिक होगा। अभी नॉन प्रिज्मेटिक में क्या होगा, द चैनल्स का जो भी क्रॉस सेक्शन है, जो भी उसका बेड है, जो भी उसका बेड स्लोप है, उसके स्लांटिंग एजेस का स्लोप है, वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू चेंज अलोंग द लेंथ। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके कंडीशंस है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बाद में दैट इज नथिंग बट द कैनाल का बेस विड्थ, उसका टॉप विड्थ, उसका एक्सकेवेटेड डेप्थ वी कैन से, देन कैनाल का बेड स्लोप आर चेंजिंग, they are changing along the length, along the length. Okay, under such conditions we can say this is nothing but our non prismatic. So non prismatic example is nothing but the river. अभी रिवर का क्या होता है, जहां पे रिवर स्टार्ट होती है, त्याला आपण मराठीमध्ये उगम म्हणतो, यानी कि जहां पे वो शुरू होती है वहां पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है, लेकिन बाद में जैसे वो आगे आगे बढ़ते जाती है तब क्या होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो बढ़ता जाता है। इट मींस इट्स अ क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग अलोंग द लेंथ। So that is example of a non-prismatic. That is a natural channels we can say. So river is example of a non-prismatic, where the planiform or it's a cross section area, that is a base width, top width, is excavated depth or total depth we can say, or bed slope, all used to change along the length, along its length, then that is called as a non-prismatic channel section. Understood? Prismatic, non-prismatic समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now after this we'll go for the No, sir, please explain once again. what happened, I've not got the thing. Please So next classification is as per the boundary conditions. Now boundary condition, what does it mean about? So boundary conditions are nothing but the canals का bed slope है, then side slope है। यदि कैनाल का बेड स्लोप ए वाला, यहाँ पे दिखाया हमने, दिस इज नथिंग बट द बेड स्लोप, ये कैनाल का बेड है और उसका जो स्लोप रहेगा S0, दैट इज नथिंग बट द बेड स्लोप। देन उसके जो साइड्स है, ये साइड्स, उसको साइड स्लोप बोलते हैं। ओके, if the channels, the boundaries of the canal is not deformable, they are not changing, they are not deforming, okay, that is shape, उसका जो शेप रहेगा वो शेप, उसका प्लेनिफॉर्म, उसका रफनेस, यदि यहाँ पे कोई इरोजन नहीं हो रहा है तो जितना रफनेस यहाँ पे रहेगा उतना ही कांस्टेंट रहेगा। इफ दोस थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, then that particular channel or the canal is called as a rigid boundary channel or rigid boundary canal we can say, rigid boundary channel or a canal we can say. So कब बोलने का rigid boundary, जब उसका साइड स्लोप रहेगा, शेप रहेगा, is not deformable, it is not changing. I would like to write in a short form, non-deformable, non-deformable cross sections, or okay, non-deformable shapes we can say, or its a roughness coefficient is a constant. Along with this, the roughness coefficient जो भी रहेगा, Manning's रहेगा, नहीं तो Chases C रहेगा, that we are going to discuss that.
that roughness coefficient is also remains same. Roughness remains same or constant throughout its length, we can say, then that is called as a rigid boundary channel or a rigid boundary canal. So iska example be once again, that is a prismatic channel, that is a man-made channel. Prismatic channels are most of the times man-made channels. Okay, then the next type under the same, that is a mobile boundary channels. Okay, so iska example मैं लिखता हूं यहाँ पे पहले. Example is a lined canals or lined channels, जहां पे उनका प्लेनिफॉर्म कभी भी नहीं चेंज होगा, उसका जो रफनेस है वो रफनेस भी यदि कांस्टेंट रह रहा है तब उसको हम रिजिड बाउंड्री चैनल और रिजिड बाउंड्री कैनाल बोलेंगे. ओके, यानी कि जो रिजिड बाउंड्री कैनाल्स रहते हैं उसमें यदि वेरिएबल है तो वेरिएबल कौन रहेगा? ओनली फ्लो डेप्थ इज अ वेरिएबल. इट मींस इन दिस चैनल्स ओनली द डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंजेस with respect to the time and space, we can say. So as only one variable changes, I would like to add the things herein. As only the depth of the flow changes, as only depth of the flow changes with respect to the time and space, यानी कि जो भी with respect to time consider कर दो, नहीं तो space consider कर दो. With respect to time and space, that's why it is also called as an having a canal only 1 degree of freedom. Okay, as only y, that is a flow depth changes with respect to the time and space, means only one variable, one parameter is changing. That's why they are also called as a canals having only 1 degree of freedom. That is, they have only 1 degree of freedom. That 1 degree is nothing but the depth of the flow. Why is it so? Because all other things, that is a excavated or total depth of the canal, we can say, excavated depth we can say, canal ka bed slope hai, channel section hai, sorry, side slope hai, they are rigid, they are not changing under any sort of the conditions. So parameter which is going to change is the flow depth, we can say. और depth change होगा तो आपका velocity और discharge allied जो things है वो change हो जाएंगे, लेकिन main cause कौन है? Y है. So we are considering the main thing as a Y, that is a flow depth. It means for such canals, that is for a rigid boundary canals, only 1 degree of a freedom is to exist. That is a flow depth we can. Mobile boundary canals or the channels are those canals, those are made up from a alluvial from the loose soil, or they are passing through the alluvial soil surface. In such cases, what happens when the canal used to run or through the alluvial soil section? Suppose that this is an alluvial soil or a loose soil is there, और इसके उसमें क्या किया है? आपका कैनल का अलाइनमेंट है. मान लो कि ये आपका कैनल का अलाइनमेंट है. This is the central line of the canal. So this will be your boundaries of the canal, so we can say. I'm showing here by a dotted line. Central line I have drawn as an continuous line, and those are nothing but your बाउंड्री लाइंस. ओके, इसके बीच में आपका कैनाल है, ये इसका अलाइनमेंट है, ये लूज सॉइल में जा रहा है. तो क्या होगा यहाँ में, जब इनिशियली मान लो कि आपका जो विड्थ है कैनाल का यहाँ पे, दैट विल कंसीडर एज अ बी. ओके, दैट विल कंसीडर एज अ बी. अभी यहाँ पे लूज सॉइल है तो क्या हो जाएगा रे? व्हाट विल हैपन विद द फ्लो? मान लो कि डिस्चार्ज इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट Q. दिस इज अ Q कमिंग आउट ऑफ द सेम, एंड बेड स्लोप एज S0 आई एम ऑब्जर्विंग. What will happen if the discharge Q is passing through this canal which is passing through the loose soil? क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? डिफॉर्मेशन हो जाएगा. किस चीज का डिफॉर्मेशन हो जाएगा रे? जब उसका जो राइट विड्थ बढ़ेगा या कम होगा रे? इट विल हैपन साइमल्टेनियसली. ओके, यानी कि क्या होगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो विड्थ है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि लूज सॉइल है तो सॉइल सरफेस यहाँ से यूरोड हो जाएगा
उसका बेस भी इरोड हो जाएगा, और जो आपका सेंट्रल लाइन यहाँ से था उसका जो इलेवेशन था, मान लो कि आपका इलेवेशन यहाँ पे 100 है, 100 meters is the elevation, okay, from the benchmark we can treat at initially. लेकिन अभी जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो डेप्थ है वो इरोजन की वजह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जो भी विड्थ है आपका, वो विड्थ भी ऐसा नया विड्थ मिलेगा उसको, और नया विड्थ के हिसाब से वो बहना शुरू कर दिएगा, ऐसा उसका विड्थ भी बढ़ता जाएगा। जो भी उसका बेड स्लोप रहेगा, मान लो कि इनिशियली वाज एट 100 मीटर्स हायर एलिवेशन था, अभी क्या होगा, यहाँ से इरोजन होने के कारण इसका एलिवेशन कम हो जाएगा, और मान लो कि ये आपका अभी 99 मीटर्स हो गया है। ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका डेप्थ चेंज हो गया, उसका विड्थ चेंज हो गया, डेप्थ और विड्थ चेंज हो गया। मान लो कि इनिशियली आपका यहाँ पे 99 मीटर्स आरएल था, लेकिन अभी क्या हो गया, हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और मान लो कि ये अभी आपका 98 मीटर्स हो गया है। मान लो कि यहाँ पे कहीं पे तो आपका 99.5 था इनिशियली, अभी वो क्या हो गया, मान लो कि वो अभी आपका 98 पॉइंट समथिंग हो गया, 98.9 हो गया। यानी कि क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी जो उसका जो स्लोप भी है वो स्लोप भी चेंज हो रहा है, यानी कि यस जीरो इज चेंजिंग, विड्थ बी इज चेंजिंग, बी उसका जो डेप्थ है, डी स्लोप है यस जीरो, बॉटम का स्लोप है, साइड स्लोप जो रहेगा आपका, दैट इज आल्सो गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू और अलोंग द लेंथ वी कैन से। यानी कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज इट्स प्लानिफॉर्म वी कैन से, दैट प्लानिफॉर्म इज चेंजिंग अलोंग द लेंथ, किसके साथ चेंज हो रहा है, दैट इज अलोंग द लेंथ, देन दैट कैनाल इज कॉल्ड एज अ मोबाइल बाउंड्री कैनाल और मोबाइल बाउंड्री चैनल। जो भी बाउंड्री कंडीशंस है, साइड स्लोप है, बॉटम स्लोप है, वो सब चेंज हो रहा है, किसके साथ, अलोंग द लेंथ, यानी कि डिस्चार्ज जो भी बह रहा है, हो रहा है उसके साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सॉइल इरोड हो रहा है। यानी कि वो कॉज जो है उसका मेन कॉज, दैट कॉज इज नथिंग बट द इरोजन एंड डिपोजिशन वी कैन से, इरोजन एंड डिपोजिशन। अभी इरोजन यानी कि क्या होता है, इरोजन इज नथिंग बट द डिटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, रिमूव हो रहे हैं पार्टिकल्स और पानी के साथ बह के जा रहे हैं, दैट इज इरोजन। और डिपोजिशन यानी कि क्या, जहां पे फ्लो का वेलोसिटी कम हो जाएगा वहां पे जाके वो सेटल हो जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे आके वो सेटल हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा विड्थ उसका बढ़ रहा है, वो सेटल हो गए, तब क्या होगा, विड्थ जो है उसका पानी उतना ही उसको आगे जाके कैरी करने का है, तब क्या होता है, वहां पे वो डिपोजिशन होता है। यानी कि ड्यू टू द इरोजन एंड द डिपोजिशन such type of the things happen, that is a cross section, planiform and all those things used to change along the length of the canal. Such type of the canals are called as a mobile boundary canals. यानी कि यहाँ पे फ्लो का डेप्थ y चेंज हो रहा है, बेड विड्थ b चेंज हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनल स्लोप वो चेंज हो रहा है, एंड उसका प्लानिफॉर्म, ओके, जो भी प्लानिफॉर्म है यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वी कैन से that also a changing. It means that such type of the canal is to have the 4 degrees of the freedom, 4 degrees of a freedom. What are those 4 degrees of freedom? डेप्थ बदलता जा रहा है, विड्थ बदलती जा रही है, लॉन्जिट्यूडनल स्लोप बदलता जा रहा है, और प्लानिफॉर्म में उसका आपका साइड स्लोप वगैरह सब आ जाएगा। It means for a mobile boundary channels we used to have a 4 degrees of freedom, whereas for the rigid boundary channels we used to have only 1 degree of freedom. इसमें कौन चेंज हो रहा था, खाली फ्लो का डेप्थ y चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, सब के सब चीजें यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है, ओके। These canals or such type of the canals we can say as an mobile boundary channels or mobile boundary canals, okay. Then mobile and rigid boundary channel, then the next classification we are going to see for the canals, that is the fifth type we can say, that is the capital F we have considered, that is as per the exposure surface conditions, exposure surface conditions. Exposure surface conditions means what?
is the top surface is open to the sky or it is covered? Is it open to the sky or it is a covered? So number of the times what we used to observe that whatever the drainage canals used to exist or drainage channels used to exist, those are gets covered. उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको कवरिंग रहता है. ओके उसके पीछे दूसरा एक मीनिंग रहता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, टॉप सरफेस जो रहता है उनका वो क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है, यानी कि हर साइड से वो क्लोज्ड रहता है. लेकिन जो नेचुरल चैनल जो रहते हैं रिवर स्ट्रीम एक्सेट्रा, उनका टॉप सरफेस जो रहता है वो हमेशा ओपन टू स्काई रहता है. So in such conditions, we can say that we used to classify the canals as a open channel and a closed channel. So first one under this as a open channel or open canal we can say. सर हेडिंग काय लिहिले? एक्सपोजर. Exposure surface conditions. Exposure surface conditions. Surface that is a top surface we can say. यानी कि ओपन चैनल में क्या रहेगा, आपका रेक्टेंगुलर होने दो नहीं तो ट्रेपेजोइडल होने दो, उसका जो टॉप सरफेस जो है that top surface is open to the sky. It's a top surface is open to the sky. So such type of the canals or the channels we can say are called as open channels or open canals. Then a natural river or a stream, I would like to go for ground level. Then this has a water surface and it's a level, and this is a open we can say, this is a top surface which is open to the sky. Okay, such types of the canals are called as open channels, and their example is a river and streams. Rivers and streams are the examples of open channels or open canals you can say. That is, surface is open to the atmosphere, the top surface open to sky. Then this is definition we can say in short form I have written over here. Surface is, top surface is open to the sky, that is a open channels. Whereas on the other side we can say the closed channels or closed canals we can say. Closed channels are those, closed channels are those whose top surface is not free or it is covered we can say. Top surface, I would like to write in a short form, it is a top surface is not exposed to the atmosphere, not directly exposed, not exposed to sky, I would like to go for. This is a definition we can say, and its example is our example for closed channels. Example, I had already given that example. Drainage channels or drainage canals we can say. They may be a we were discussing about the closed channels, that is a drainage canals. So drainage canals may be either a trapezoidal or a rectangular or a circular. Then also they used to be get covered, their top surface is used to be get covered by a plates like this. Okay, might be you had seen such type of the covering plates for the drainage lines, those are existing or those are there on a side by the national or state highways. नेशनल और स्टेट हाईवे जो रहते हैं उनके साइड में जो गटर्स रहते हैं उनके ऊपर ऐसा कवरिंग रहता है हमेशा. ओके, बहुत बार उसका जो सरफेस है दैट इज गेटिंग यूज्ड फॉर द इट इज गेटिंग यूज्ड फॉर द वॉकिंग. बऱ्याच वेळा तो पोर्शन बऱ्याच वेळा जे वॉकर्स राहतात ते त्याचा वापर करतात. ओके, सो सच टाइप ऑफ द कंडिशन दैट मे बी द rectangular, triangular or a circular we can say. If circular is there, in that case it will be get automatically closed. Okay, it will be get automatically closed because top surface is now closed here, and here this is a water surface we can say. So flow depth as a y, and here also the flow depth as a y. Okay, means whenever the surface of the top surface of the canal is not exposed to the atmosphere or the sky, then it is closed, and if it is open to the sky, then in that case it is nothing but the open.
Understood about this? Have you Yes, understood this? sir. Okay. It is all about the classification of the channels. Now we'll start for the most important, that is the basic part of the canals. That is about then geometrical properties. Just now we discussed about the depth and all those things. So when to say, or which parameters can we say as a flow depth, what is the water area, weighted perimeter, likewise. Those things and allied things we will start now for the discussion. So on the heading as a geometrical properties. So heading as a geometrical properties. Geometrical properties of canals. Okay. So geometrical properties are various properties we can say. So in that now, first property which we are going to discuss, that is about the flow depth. So flow depth जो रहती है वो कहाँ से measure करते हैं रे? Flow depth I would like to go for firstly as a first geometrical property as a flow depth. Okay, in bracket name it as a y. So what is the exact dimension of the flow depth we can say? मान लो कि आपका जो कैनाल है, this is the canal boundary we can say, ऐसा बह रहा है, इसका स्लोप है मान लो कि बेड स्लोप एज अ S0 आई वुड लाइक टू राइट ओवर हियर बेड स्लोप ऑफ द कैनाल, एंड जो उसमें पानी बह रहा है उसका जो डेप्थ है, दैट फ्लो डेप्थ आई वुड लाइक टू गो फॉर बाय अ डिफरेंट कलर, that water surface we can say, top water surface. This is a top water surface. So water is flowing from this point, that is a Q, that is inlet section we can say, and here as an outlet under consideration. So flow of depth or depth of the flow we can say, that how to measure, what will be the flow depth herein, किसको बोलेंगे रे, कहां से मेजर करना पड़ेगा हमें फ्लो डेप्थ? मैंने पहले से बोल के रखा है कि जो भी फ्लो का डेप्थ रहता है दैट विल बी गेट मेजर्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर. जो टॉप सरफेस रहता है वहां पे फ्लो का डेप्थ 0 ऐसा बोलते हैं. सो हियर विल बी द डेप्थ ऑफ द फ्लो एज 0 मीटर्स. आई हैड रिटन द मैग्नीट्यूड. लेकिन यहां से मेजर करते वक्त आई वुड लाइक टू गो फॉर टू थिंग्स ओवर हियर. मैं आपको यहाँ पे दो एरोज से यहाँ पे मार्क करूंगा. यू हैव टू टेल मी दैट व्हिच वन इज अ करेक्ट. This is one of the thing. Then I would like to go for firstly the tangent to this surface. मान लो कि tangent जो है water surface को, this is the tangent I would like to the water surface, or instead of the water surface I would like to go for a tangent to the bed slope we can say, tangent to the bed slope. And the another way by which we are going to measure, that is exactly a line perpendicular to this one. This is perpendicular to the bed. Now you to tell me that which one is the flow depth. कौन सा है? Which one is a flow depth? Is this red color is a flow depth या this one is a flow depth जिसको हम y बोल के रखा है? Which is that? Depth of the flow, huh? Which one is a flow depth here? Perpendicular है this. Blue color. Perpendicular is a flow depth. I will give you a practical example so that you will get an idea. Okay. So मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे आप ऐसे खड़े हैं. आपका हाइट मेजर करना है. ओके, आपका हाइट मेजर करना है. ओके, तो क्या करोगे आप? यहाँ से सीधा जो भी हाइट आपका आएगा, दिस इज नथिंग बट योर हाइट h, isn't it? अभी क्या किया है, जो सरफेस है यहाँ का वो ऐसा टिल्ट किया है. वो जो सरफेस है जिसके ऊपर आप खड़े थे, वो सरफेस क्या कर दिया, ऐसा टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन कर दिया. अभी आप यहाँ पे उसके ऊपर खड़े हैं. कैसे खड़े होंगे अभी? मान लो जस्ट मिनट.
अभी स्ट्रेट ऐसे तो नहीं हो पाएंगे। हाँ ओके, हाँ ओके, दिस इज द इंक्लाइन वन। अभी यहाँ पे आप जब भी आपका हाइट मेजर करोगे तो हाइट आपका मेजर ऐसा करोगे कि आप लाइक दिस, जस्ट मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक, इज दिस विल बी योर हाइट, No, sir. No. देन हाँ Parallel to that. बोलो, हाँ दिस इज रॉन्ग, एग्जैक्टली दिस इज रॉन्ग वन, दिस इज नॉट अ डेप्थ, दिस इज नॉट द हाइट, सॉरी डेप्थ यदि पानी है तो डेप्थ होगा, ये हम यहाँ पे हाइट मेजर कर रहे हैं। सो हाउ व्हाट विल बी द हाइट देन एग्जैक्टली, हाउ यू विल मेजर दैट? Will this will be As the, we measure in the diagram 1, like that we measure it parallelly. is this is the height h? Yes. If this is the height h, then what is the difference between this h and this h? Suppose that this is the b and this is the a. This one is absolutely correct. Here if you will see, then here we have measured, this is a perpendicular to the surface on which we are resting. Here also we are resting on this, so we have measured perpendicular to this surface, we can say, or the top surface, we can say. Top surface and all those things you have measured a perpendicular. It means that the depth of the flow is nothing but the perpendicular distance between the water surface and the canal bed, we can say. जो भी canal का bed रहेगा, that canal bed and the water surface, the whatever that exact perpendicular dimension will be there, that perpendicular dimension is nothing but the depth of the flow at that particular section, isn't it? अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बरोबर. Okay, just a minute. Okay. So in this case we can say that this is nothing but our y, we can say, which is a perpendicular, we had shown over here. Okay, and if you consider this vertical distance, then this vertical distance is nothing but the depth of the canal from the top surface to this one. यानी कि मान लो कि आपका कैनाल ऐसा आपने एक्सकेवेट करके रखा है यहाँ पे, मान लो कि दिस इज योर कैनाल, ओके, और यहाँ पे जो पानी बह रहा है, this is the your flow depth y, and this is the excavated depth is nothing but the d I have considered over here. Okay, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि d and y both used to be the same one, बहुत बार यानी कि जब डेप्थ आपका सेम रहेगा तब यानी कि यहाँ पे भी होगा तो d इक्वल्स टू y, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके चैनल के बेड स्लोप पे डिपेंड करता है, चैनल के बेड स्लोप पे वो डिपेंड करता है। तब क्या किया जाता है, so actually the excavated depth is a d herein and this is a y, so you will go for a vertical line herein, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है हमने, I will go for the same at this position, at this location, we can say. Okay, this is a vertical. Then here we can say that this line, this y, flow depth y, used to make an angle theta with respect to the vertical. इसने एंगल कितना कर दिया, that theta is angle made by this thing with respect to vertical, and here this is a horizontal line. Okay, so अभी क्या होगा यहाँ पे, this will be now the incline one, we can say. Okay, जो भी पोर्शन हमारा यहाँ पे आएगा, स्ट्रेट डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पर, यहाँ का, that will be the incline one, और बाय रिलेशन क्या आता है, that is a y is equals to d cos of the theta आता है, और theta जो रहता है, that vertical distance that is used to be so small, it means that nearly the cos of the theta is equals to 1. So cos theta nearly equals to 0 है, sorry, theta is a nearly equals to 0, means the theta, that term cos theta is a nearly equals to cos of a 0, and cos 0 is a equals to 1. So we used to consider the y is equals to d, यानी कि यदि हमने ऐसा डायरेक्टली वर्टिकल प्लम्बॉब भी डाल दिया यहाँ पे, मान लो कि यूनिफॉर्म फ्लो है, तो रेस्ट में है फ्लो, और उसमें हमने प्लम्बॉब डाल दिया, नहीं तो कोई कुछ तो उसको वेट लगाया,
और सीधा वो वेट ऐसा हमने नीचे छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, नीचे जाके उसके ग्राउंड के सरफेस को टच कर दे जाएगा। तभी भी हम क्या ट्रीट करेंगे, एज बेड स्लोप उसका जो है वो बहुत कम है, तो क्या होगा, दैट डी विल बी नथिंग बट अवर वाई, यानी कि इन जनरल वी इज टू कंसीडर दैट y is equals to d, we can say over here. Okay, so that is the thing. It means that the flow depth y is nothing but the vertical distance between the water surface and the bed. Actually the depth d at the section is the distance of water surface perpendicular to the bed of the channel, यानी कि जो भी एक्चुअल डेप्थ जो रहेगा कैनल का एक्सकेवेटेड जो रहेगा, दैट वी इज टू कंसीडर एज एन डी, इट इज अ परपेंडिकुलर, बाय मिस्टेक वी हैड कंसीडर्ड एज एन y over here in, but if you consider those things in terms of the angle theta, then we come across the condition that the theta is so small, and the so small means the theta approaches to the zero or close to the zero, and cos theta becomes an a 1, so we used to consider that y is equals to d. It means यानी कि हर बार हमें वैसा ही करना नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं तो सीधा उसको एक स्ट्रिंग ले लिया, एक कुछ तो रस्सी ले लिया और उसको एक हमने वेट अटैच कर दिया नीचे, तो क्या होगा, वो यदि हमने डाल दिया उस कैनाल में तो वो नीचे तक जाएगा जहां पे आपका सरफेस रहेगा, यानी कि मान लो कि यहाँ से हमने डाल दिया वो, तो वो यहाँ तक सीधा जाएगा, और उसको स्ट्रेट करने के बाद जहां पर तक वो वेट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट अवर एक्चुअल डेप्थ। क्योंकि यहाँ पे जो कैनल एक्चुअल में रहेगा वो एक रेक्टेंगुलर है, लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, ऐसा आ जाएगा। तो सेक्शन में मेरे को आएगा या नहीं, आई विल सी दैट दिस विल बी लाइक दिस, यानी कि क्या होता है, वाटर सरफेस जो रहता है वो यहाँ पे क्या होता है, टिल्ट होता है, लेकिन आप मेजर कहाँ से करते हैं, मेजर यहाँ से कर रहे हैं, आपने एक रस्सी ले ली है, उसको एक वेट अटैच कर दिया है और उसमें वो आपने यहाँ से डाल दिया नीचे, तो वो क्या होगा, उस सीधा जाके यहाँ पे टच कर देगा, कहाँ पे, यहाँ पे टच कर देगा, और उसको हम y बोल रहे हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट द y, एक्चुअली व्हाट इज इट, एक्चुअली दिस इज अ d, this is a depth we can say, but we are considering this as a flow depth as a y. Okay, this is the concept regarding the flow depth. Then after the flow depth y, there is to be a top width. अभी top width क्या रहेगा, this is nothing but the top width t, this is the distance between the what we can say, the boundaries, two boundaries of the channel, that is the width of the channel section at the free surface. The width of the channel section at the free surface is nothing but the top width, whereas the width of the channel at its base is nothing but the base width. Base width is at the base and top width is at the top. Then free water surface, this is nothing but the free water surface. Then the next important parameter, that is the flow area, or it is also called as a water area. Flow area or a water area. Flow area, or it is also called as a water area, or it is also called as a weighted area. So which area of the canal can be treated as an weighted area or a flow area? कौन से एरिया को हम उसके फ्लो एरिया और वाटर एरिया बोलेंगे? So whenever we used to consider as an weighted area or a flow area, we can say, then in that case, while flowing water inside the canal or the channel, the area which is getting actually weighted, that area is considered as an weighted area. For example, suppose that we have a rectangular channel like this, whose base width is a b and whose top width is a t. Suppose that this is an rectangular channel section, and the flow which is passing through the same is this one. This is our flow, and this is a depth of the flow as a y we will consider over here. Then suppose that the excavated depth from the top surface of the ground to the bottom surface of the canal as a d, then this has its base width as a b and a top width as a t. For this case, the top width and the base width both will be the same one. Now for this particular channel section, what will be the weighted area? Weighted area A will be equals to A suffix W I want to go for. Weighted area. Is it a D into B or B into Y? This will be B into Y. यानी कि जब पानी इसमें से जा रहा है
तो पानी जाते वक्त जितना एरिया वो वेट कर रहा है, ओके, जितना एरिया वो वेट कर रहा है उसको हम वेटेड एरिया बोलेंगे. यानी की जो पाणी याच्यामधून जात असताना जेवढा एरिया तो ओला करणार आहे, त्याच्या बऱ्याच वेळा काय होतं की बाय सीपेज अँड पर्क्युलेशन वी कॅन से, और ड्यू टू सॉरी ड्यू टू कॅपिलॅरिटी द वॉटर यूज टू फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो. डेप्थच्या वरतीही पाणी थोडासा एरिया ओला होतो. वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट दैट. फ्लो के सरफेस के वाटर सरफेस के नीचे जितना भी एरिया वो पानी वहां पे भिगा रहा है, वेट कर रहा है, दैट एरिया इज नथिंग बट द वाटर एरिया और द फ्लो एरिया. यानी कि जो भी इसमें फ्लो रहेगा दैट विल बी द फ्लो एरिया, दैट विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर एरिया. जो पानी वहां पे बह रहा है उसका भी क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा जितना आपका वेटेड एरिया रहेगा. सो दैट इज नथिंग बट द B into Y we can say. This is for our rectangular channel section. Similarly for the trapezoidal, मान लो कि आपका trapezoidal channel section ऐसा है, ये उसका side slope है, इसका bottom है. Once again on this side also we'll have the slanting edge. Suppose that both the slanting edges are having the same side slope. As a vertical, as a one vertical रहेगा तो horizontal उसका हम Z assume करेंगे इसके आगे. Okay, so for one vertical Z horizontal, that will be our assumption here after. Then मान लो कि this is a water surface और जो flow का depth है that flow depth is a Y for this particular condition. Okay, base width is a B, total depth of the canal that we are assuming here as a D, and top width as a T. So top width कहां से रहेगा, यहां से लेके वो यहां तक हमारा टॉप विड्थ रहेगा. अभी इसका हमें यदि एरिया निकालना है, वेटेड एरिया, तो उसमें क्या क्या आएगा. द एरिया वी आर गोइंग टू डिवाइड हियर इन. आई विल टेक अनदर वन कलर. Suppose that from this portion I would like to go for one of the triangle from this corner, and another triangle I would like to go for from this corner. Okay, and we're assuming that side slope for both the slanting edges is the same one, that is a one vertical as to Z horizontal. Then we'll consider that the area will be the combination now. Suppose that this as a A1, this as a A2, and this as a A3. It means that weighted area below the water surface, that is AW, we can say that will be A1 plus A2 plus A3 will be there. Then A2 will be directly B into Y, that is a base width B into the flow depth as a Y will be there, isn't it? That means that it will be equals to A1 plus B into Y plus A3 will be there. But here that A1 will be equals to A3. Why is it so? Because the slope of the slanting edge is the same and the Y is also same, means height is the same and slanting edge is same, means the top width we can say that top width will be a common one. So top width I will consider here as a small t1 for this triangle, small t2 for this rectangle, and a small t3 for this triangle. So why is it so? Because t1 is equals to t3, then y1 is equals to y3, and the slope of the slanting edge is also the same one. So that's why the area A1 will be equals to A3. अभी A1 और A3 क्या है, ट्रायंगल्स है, तो उसका एरिया क्या रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट रहेगा. सो आई वुड लाइक टू राइट फर्स्टली हियर एज 2 टाइम्स एरिया A1 प्लस B इंटू वाई. मैंने 2 टाइम्स A1 क्यों लिखा, क्योंकि A1 इज इक्वल्स टू A3 है. सो A1 प्लस A1 एज अ ट्वाइस A1 प्लस BY. So that will be equals to 2 times. Now what is the area A1? What is the area A1? अरे कितना रहता है ट्रायंगल का एरिया? Y by T1. Y by T1. Y by 2T1. यानी कि बेस इंटू हाइट रहता है, isn't it? 1/2 base into height I would like to write plus B into Y, isn't it? यानी कि क्या रहेगा, that is a 2 times base as a T1 into height as a Y. अभी T1 हम कोरिलेट कर सकते हैं,
किसके साथ? with respect to the y and z we can say, with respect to y and z. y क्या है? वर्टिकल है, और z क्या है? हॉरिजॉन्टल है. अभी यहाँ पे देखो अच्छी तरह से, I would like to go for another triangle so that you will get an idea what I want to say over here. This is our triangle. Okay, this is our flow depth as a y. Then this is our top width as a small t. I have written over, either it will be t1 or t2. और ये जो साइड है स्लांटिंग एज है, उसका जो स्लोप है उसको हमने क्या अज्यूम किया है? 1 वर्टिकल एज टू z हॉरिजॉन्टल लिया है, isn't it? 1 हॉरिजॉन्टल एज टू z वर्टिकल लिया है. यानी कि यदि 1 हॉरिजॉन्टल है, 1 मीटर 1 यूनिट x है, तो z यूनिट वो क्या है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल है. अभी हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है? t1 है. देखो ना, हॉरिजॉन्टल क्या है? t1 है. तो हमें वर्टिकल कितना है वो निकालना है. उसके लिए 1 हॉरिजॉन्टल के लिए 1 यूनिट, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया यहाँ पे. 1 वर्टिकल इज इक्वल्स टू y है हमारा, 1x इज इक्वल्स टू y वर्टिकल है. ओके, 1 के लिए y है, तो t1 के लिए कितना z रहेगा? सो z का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, दैट इज in terms of the z we can say, so t1, sorry, z is equals to, it will be a t1. Okay, so that will be, just rearrange the terms. What will be the magnitude over there? Just rearrange the terms. Just by cross multiplication we'll get the t1, that is a top width, in terms of the slope of the side, it is a 1:z we have considered. It is a 1 into t1 will be equals to z into y. Z is nothing but the horizontal slope for 1 vertical we can say, so that will be y into z, product of y into z. Now just put up the things, you will get the area over here. So for this case now we will get t1 into y plus b into y was there in, that is equals to 2 times. Now what is the t1 over here? t1 हाँ, और कितना है? Y into Z. Y into Z. y into z into y plus b into y, that is equals to 2 times, हाँ 2 times ना, 2 टाइम्स एरिया था, ये था, लेकिन यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट था. यहाँ पे हमारा 2 से डिवाइड करना रह गया है. मालूम है क्या? यहाँ पे ये एरिया किसका है? ट्रायंगल का है. तो ट्रायंगल का एरिया क्या आता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि क्या होगा? ये 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा. सही ना? Yes, sir. ओके, Sir. तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा? पहले ब्रैकेट में Y square Z. Y square Z. y square z plus b into y we can say, isn't it? So this is the area of this weighted area of this particular trapezoidal channel section. यहाँ पे हम y कॉमन भी ले सकते हैं, यदि आपको लेना है you can go for, if you want, then otherwise if you not if you don't want to go for, then also it works. Okay, so how you have considered? We have considered the slope as 1:z for this triangle, slanting edge we can say, then depth of the flow as a y, and then we have considered the ratio as a 1:z, means for a 1 vertical y depth is there, so for how much z, that will be t will be there. So t in terms of the z, यानी कि जो भी आपका स्लोप रहेगा यहाँ पे 1:10, 1:100, 1:10,000, 1:4, जो भी होगा आपका, by that we will be able to get the magnitude of the this base width. बहुत सारे बुक में क्या लिया है? instead of the z they have considered the n, x, etc. So we have considered here as an small z. Okay, after this weighted area, the next parameter is the weighted perimeter. The second or third, whatever it may be, I'd have to go for as a weighted perimeter. So weighted perimeter in the sense what? जब पानी कैनाल से बह रहा है, यानी कि पानी कैनाल से जा रहा है, तब जितना डायमेंशन वो वेट करता है,
जितना डायमेंशन वो भिगोता है, that addition of the dimension of that weighted portion we can say, that is nothing but the weighted perimeter. यानी कि यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है. इस क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारा फ्लो का डेप्थ है, तो वो पानी क्या कर रहा है, ये साइड भिगो रहा है, दिस साइड इज गेटिंग वेटेड, कहां तक, बॉटम तक. उसका मैग्नीट्यूड कितना है, y उतना है. ये हो गया लेफ्ट साइड का. बाद में हमारा बेस विड्थ है b है, ये पूरा के पूरा पोर्शन वेट हो रहा है, ओके, वो कितना है, b है. और इस साइड का जो पोर्शन है वो हमारा कितना है, वो हमारा फिर एक बार y है. यानी कि फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन वी कैन से, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन द वेटेड पेरीमीटर p is nothing but the y plus b plus y, that is a 2 into y plus b. यानी कि जब पाणी इसमें से बह रहा है, जा रहा आहे, ज्यावेळेस कॅनल मधनं पाणी जातो, त्यावेळेस कॅनल मधनं पाणी जात असताना त्या पर्टिक्युलर सेक्शनला चॅनलच्या किंवा कॅनलच्या जेवढी डायमेन्शन ते पाणी ओलं करतं, त्या डायमेन्शनची ऍडिशन केल्यानंतर जे मॅग्निट्यूड मिळतं, दॅट इज नथिंग बट द वेटेड पेरीमीटर. मग इथं किती वेट केलं त्याने, इकडच्या साईडची डेप्थ आहे y1 आहे, सॉरी y आहे फ्लो डेप्थ, बेस विड्थ आहे b, आणि या साईडची डेप्थ आहे y. So by adding those things, whatever the dimension we is to get, that is nothing but the perimeter, and that which perimeter we want to have, weighted perimeter. कि जो भी भीग रहा है, जेवढा ओला होतोय पेरीमीटर, that perimeter we want to have. So for rectangular channel section, that weighted perimeter will be 2y plus b रहेगा, isn't it? Then for a trapezoidal, अभी trapezoidal के लिए कितना रहेगा, मान लो कि हमारा जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट्स को नाम देता हूँ a b c और d है. सो फॉर ट्रेपेजोइडल कितना रहेगा रे वेटेड पेरीमीटर, कंसीडरिंग दिस सेक्शन, फॉर अ ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन व्हाट विल बी वेटेड पेरीमीटर p, AB plus BC plus CP. ab plus bc plus cd, that will be the weighted perimeter we can say for the trapezoidal channel section. Okay, understood up to this? Weighted area, weighted perimeter. Yes, sir. Okay, so today we'll stop here and we'll continue in the next lecture. Okay.